was also mentioned in these 5 points, including safety of passage of crew members and stranded in the Strait of Hormuz, allow the safe passage of civilians and commercial ships, and restore normal passage through the straits as soon as possible. So this was, ladies and gentlemen, in the gist of the 5 points peace, 5 points peace initiative by Pakistan and China. And moving on to some of the other aspects, which includes the roundup of the important telephone conversations that was held between Prime Minister and of Pakistan, Honorable Prime Mohammad Shahbaz Sharif, received a telephone call from His Highness Sheikh Sabah Al Khalid Al Hamad Al Sabah, the Crown Prince of the State of Kuwait, expressing a strong condemnation of attacks against Kuwait. The Prime Minister also apprised the Kuwaiti leadership of Pakistan's sincere diplomatic efforts to bring an end to the war in the Middle East. While expressing deep appreciation of the Prime Minister's leadership, the Crown Prince of Kuwait fully endorsed Pakistan's efforts for mediation between Iran and the US. He also thanked the Prime Minister for Pakistan's support to Kuwait in the current crisis. The next day, the Prime Minister held an important telephone conversation with His Excellency Dr. Masood Pezeshkian, the President of the Islamic Republic of Iran. Our Prime Minister briefed the Iranian President on the strong endorsement of Pakistan's peace initiative and expressed the hope that the viable path towards ending hostility could be found collectively. While appreciating Prime Minister's sincere diplomatic efforts, the Iranian President shared his perspective on the ongoing hostilities perpetrated particularly by Israel against Iran. He stressed upon the need to build trust in order to facilitate talks and mediation, and in this regard he acknowledged the Prime Minister's Pakistan's supportive role for peace. On 31st March, the Prime Minister received a telephone call from His Excellency Antonio Costa, the President of the European Council. The two sides exchanged views on ongoing hostilities in the Middle East. They also discussed strengthening Pakistan-EU relations, including the importance of GSP Plus and upcoming Pakistan-EU Business Forum in Islamabad, scheduled end of this month. The Deputy Prime Minister and Foreign Minister, Senator Muhammad Ishaq Dar, also held important telephone calls during this week. Very briefly, let me list those. On 27th March, he held the telephone conversation with the Foreign Minister of China and the member of the Political Bureau of the CPC Central Committee, Mr. Wang Yi. The two leaders exchanged views on the evolving regional situation. The Chinese side expressed their deep appreciation for Pakistan's constructive role in promoting de-escalation and conveyed China's support in this regard. Both leaders reaffirmed that Pakistan and China are strategic cooperative partners bound by mutual trust. They agreed to continue working closely to promote peace and stability in the region and beyond. And 3 to 4 days later to this telephone call, the visit of the Deputy Prime Minister to China took place. The second important telephone conversation was the DPM held on the same day with the Foreign Minister of Egypt, Dr. Badr Abdul Ateh. He also spoke on the same day with the Foreign Minister of Turkey, and he also spoke with the Foreign Minister of Turkey on 27th March and then on 31st March. On 28th March, the DPM held a telephone conversation with the UN Secretary General, Mr. Antonio Guterres. They exchanged views on the evolving situation in West Asia and its implication for international peace and security. The DPM underscored that United Nations remains indispensable to conflict prevention and resolution, and reaffirmed Pakistan's unwavering commitment to diplomacy and dialogue as the only viable pathway towards sustainable peace. Secretary General Guterres expressed appreciation and
extended full support for Pakistan's ongoing diplomatic efforts in pursuit of peace and stability in the region. On 28th March, the DPM spoke with the Prime Minister and the Minister of Foreign Affairs of the State of Qatar, His Excellency Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Jassim Al Thani, and the same day he held a telephone conversation with the Foreign Minister of Indonesia, Mr. Sugiarno. On 29th March, he spoke with the Foreign Minister of Iran, His Excellency Abbas Araghchi. The two leaders discussed the evolving regional situation and ongoing developments. DPM emphasized the need for de-escalation, stressing that dialogue and diplomacy remains the only viable path towards lasting peace. This conversation took place on the eve of the four-party talks in Islamabad, the group of 4 foreign ministers. Ladies and gentlemen, through this week you must have seen an important post by our Deputy Prime Minister allowing that the government of Iran has allowed 20 more ships under Pakistan flag to pass through the Strait of Hormuz. 2 ships will cross the strait daily, and he said that this was a welcome development and constructive gesture by Iran, which deserved appreciation. It is a harbinger of peace and will help usher stability in the region. This positive announcement marks the meaningful step forwards towards strengthening our collective efforts in this direction of dialogue, diplomacy, and such confidence-building measures are the only way forward. And you must have observed the subsequent appreciation of this gesture and this initiative. Finally, ladies and gentlemen, you must have seen on Tuesday the 8 foreign ministers, that is of Pakistan, Egypt, Jordan, United Arab Emirates, Indonesia, Turkey, Saudi Arabia, and Qatar issued a joint statement condemning and forthrightly rejecting the continued restrictions imposed by Israel on freedom of worship of Christian and Muslims in occupied Jerusalem, including the prevention of Muslim worshippers from accessing Al-Aqsa Mosque and Haram al-Sharif, and the prevention of Latin Patriarch of Jerusalem and the custos of the Holy Land from entering the Church of the Holy Sepulchre to celebrate the Palm Sunday Mass. The foreign minister renewed their condemnation and rejection of any Israel attempts to alter the legal and historical status quo of the Muslims and Christian holy sites in Jerusalem. The ministers reaffirmed their absolute rejection of the illegal restrictive measures by Israel against Muslims and Christians in Jerusalem, including preventing Christians from accessing the Church of Holy Sepulchre to perform their religious mass. They stressed the necessity of respecting the legal and historical status quo of Jerusalem and its Muslims and Christian holy sites. Reiterated that Israel, as the occupying power, has no sovereignty over occupied Jerusalem, and underscoring the need to halt all measures that impede worshippers to access these places of worship. The ministers reiterated that the entire area of Al-Aqsa Mosque, Al-Haram al-Sharif, amounting to 144 dunams, is a place of worship exclusively for Muslims in Jerusalem. Endowment and of Al-Aqsa Mosque Affairs Department, affiliated with the Jordanian Ministry of Awqaf and Islamic Affairs, is the legal entity with exclusive jurisdiction to administer the affairs of the blessed Al-Aqsa Mosque, Al-Haram al-Sharif, and regulation of entry to this site. They also called on the international community to adopt a very firm, strong position that compels Israel to halt its ongoing violations and illegal practices against Islamic and Christian holy sites in Jerusalem and the violation of the sanctity of these holy places. With this, I conclude my opening remarks, and now the floor is open for question answers. जी
Ji, at the back. Thank you, sir. Sir, talks are being held between Afghanistan and Pakistan in China. So, can you please share the details if you have any? Talks between Pakistan. Yes, these talks, you meaning the talks that are being taking place in Urumqi? Yeah. Yes, Pakistan has sent its delegation. Pakistan has sent its delegation to Urumqi in line with its consistent position and long-standing practice of supporting credible process that can help durable solution to sanctuaries in and across border to stop the cross-border terrorism from Afghanistan. Our participation is a reiteration of our core concerns. The burden of real process, however, lies with Afghanistan, which must demonstrate visible and verifiable actions against terrorist groups using Afghan soil against Pakistan. Thank you. Ji Mateen Sahab. Thank you, Mr. Spokesperson. So at the end of talks between Chinese and Pakistani foreign minister, a 5-point peace formula was agreed upon. Since Pakistan is mediating between United States and Iran, so this 5-point formula, please confirm, has been shared with Iranians and with Americans. If so, what is their response? And what is the next phase of this after Beijing? Then what is the follow-up as far as Pakistan has been playing a role of facilitator to de-escalate situation? On the other hand, there is no reduction of this ongoing crisis. American-Israeli war is continuing against Iran. Thank you. Any follow-up? Well, let me first on these 5 points. The 5 points have received appreciation from across the region and beyond. I think there were some statements from the U.S. leadership about appreciation of diplomatic efforts. You must have noticed the commonalities between the 5-point peace plan announced in Beijing with the 7-point summary of the four-party talks, the group consultations that were held in Islamabad. So there's significant commonalities in those groups, and I think the initiative and the points, not just in Urumqi, in Beijing, but also in Islamabad, have received appreciation. It is an effort towards ending war. It is an effort towards cessation of hostility, and it is an effort towards paving the way for a sustainable pathway towards finding the lasting settlement of this. कराची में बेस्ट बिरयानी कहाँ मिलेगी? मेरे घर पे मिलेगी। ये ले आई है नेशनल की बॉम्बे बिरयानी कराची खास। जो भी घर लाए कराची की बेस्ट बिरयानी बनाए। पहुंच गए? हाँ, ऑलमोस्ट गया। तुम पहुंच गई? हाँ, मैं बस बैठ ही गई हूँ। Get ready for 5G from Ufone and Telenor. It's more than just speed. जहाँ प्यार की रस्में, वादे कस्में, चाहत का इकरार है, वहाँ गुल बहार है। जहाँ प्यार, वहाँ गुल बहार। दागों से हुई खुल के फाइट, मूड हुआ डिलाइट, इतनी अमेजिंग जो है प्राइस। 1 kg पैक अब 550 रुपए में। डॉन न्यूज आवरली क्लॉक के लिए ताउन किया है। 1 kg पैक अब 550 रुपए में।
5 साल की वारंटी के साथ। रॉयल इन्वर्टर फैंस, साथ जिंदगी भर का। Get ready for 5G from Ufone and Telenor. It's more than just speed. हेडलाइंस के लिए ताउन किया है। अम्मी मेरी पाकिस्तान की तस्वीर जीत गई। We are on track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly. We are going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. If there is no deal, we are going to hit each and every one of their electric generating plants very hard and probably simultaneously. अमेरिका का ईरान जंग जारी रखने का ऐलान। आइंदा 2 से 3 हफ्ते में ईरान पर खतरनाक हमलों की धमकी। ईरान को वापस पत्थर के जमाने में भेज देंगे। डील ना करने पर ईरानी पावर प्लांट्स और तेल तनसीबात पर सख्त तरीन हमले किए जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप का कौम से खिताब में इंतबाह। ईरानी तेल की तनसीबात को आसान हदफ करार दे दिया। वाज़ेह किया कि तेल तनसीबात पर हमलों से ईरान को दोबारा उठने का मौका नहीं मिलेगा। 2 से 3 हफ्ते में ईरान में तमाम फौजी मकासद हासिल करने का दावा भी कर दिया। Iran has been essentially decimated. The hard part is done, so it should be easy. And in any event, when this conflict is over, the Strait will open up naturally. It'll just open up naturally. They're going to want to be able to sell oil because that's all they have to try and rebuild. It will. सदर ट्रंप का ईरान को मौशी और हर लिहाज से खत्म करने का दावा। खलीजी ममालिक अजीम करार, तमाम खतरात से तहफ़्फ़ुज़ का वादा। वाज़ेह किया कि वेनेज़ुएला के बाद मशरिक़ी वस्ता के तेल की ज़रूरत नहीं रही। अमरीका अपना हुर्मत से तेल लेता है और ना लेगा। जिन ममालिक के पास तेल नहीं वो अमरीका से हासिल कर लें। जो ममालिक तेल हासिल नहीं कर सकते उन्हें अपना हुर्मत से तेल खुद लेना होगा। ट्रंप ने ईरानी हुकूमत पर 45,000 मुजाहिरीन को कत्ल करने का फिर इल्ज़ाम लगा दिया। उन्होंने कहा कि जनरल सुलेमानी को ना मारा जाता तो आज ईरान कहीं ज़्यादा मजबूत होता। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में ईरान की न्यूक्लियर तनसीबात तबाह कर दी थी। ईरान ने दूसरे मकाम पर न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखने की कोशिश की। ईरान कोई जारे मुल्क नहीं। अमरीका यूरोप या किसी मुल्क के अवाम का दुश्मन नहीं। अमरीका इसराइली प्रॉक्सी बनकर हमलावर हुआ, दिफाई कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। ट्रंप के खिताब से कबल ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का अमरीकी अवाम के नाम खुला खत। ट्रंप की धमकियों के बाद ईरान ने इसराइल और अमरीकी अहदाफ पर 100 मिसाइल और 200 रॉकेट दाग किए। तर्जुमान पासदारान इनकलाब के मुताबिक तल अवीव, एलात और बनी बराक को निशाना बनाया गया। बहरीन और मुत्तहदा अरब अमारात में अमरीकी अड्डों पर हमले, हेलीकॉप्टर्स और रेडार तबाह। बहरीन में अब्राहम लिंकन को ड्रोन से टारगेट किया गया। ईरान ने खलीजी ममालिक में अमरीकी अड्डों पर हमलों की सेटेलाइट तस्वीर जारी कर दी। अमरीकी अहदाफ कामयाबी से निशाना बनने के बाद नुकसानात से दो चार देखा गया। ईरानी हमलों में कुवैत और सऊदी अरब में अमरीकी ज़ेर इस्तेमाल गोदाम, मरम्मती मराकज़ और अहलकारों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। نخستین هدف تهاجمی این نیرو دو رادار هشدار زودهنگام در اختیار آمریکایی‌ها در منطقه و مستقر بر یک سازه دریایی در آبها و جزایر امارات با دقت بالا منهدم گردیدند. ईरानी फौज का मुत्तहदा अरब अमारात में अमरीकी फौज के खुफिया इजलास पर हमला, 37 फौजियों को हलाक करने का दावा। खलीज फारस में इजरायली ऑयल टैंकर को भी निशाना बनाया गया। हिज़्बुल्लाह का इसराइल पर 24 घंटों में 60 हमलों का दावा। मज़ाहबती तंजीम के मुताबिक हसास फौजी ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाया गया। 45 इसराइली फौजी हलाक और 4 टैंक तबाह करने का दावा कर दिया।
इसराइल का 48 घंटों में तेहरान के सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर पर 400 हमलों का दावा। अस्फहान में फजाई बमबारी से एयरपोर्ट को नुकसान पहुंचा। असलहा डिपो पर हमले की फुटेज भी सामने आ गई। लारिस्तान के इलाके में अमरीकी और इसराइली फजाई हमले में 4 अफराद जान बहक और 8 जख्मी हो गए। जजीरा कश्म में वाक़ दोहा पियर और बंदर चाक की तजारती बंदरगाह पर मिसाइल दागे गए, जिससे साहिली तनसीबात को शदीद नुकसान पहुंचा। अमरीकी और इसराइली फजाइया का तेहरान पर हमला। साबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा कमाल खराजी जख्मी और अहलिया शहीद हो गई। अली खराजी साबिक सुप्रीम लीडर अली खामनाई के मुशीर भी थे। अमरीका ने ईरान को डील पर मजबूर करने के लिए सफारती महाज खोल लिया। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस मंगल तक तनाज़े पर सालिसों से बातचीत करते रहे। सदर ट्रंप ने जेडी वेंस को पैगाम पहुंचाने की हिदायत दी थी। ट्रंप ने पैगाम भेजा कि वो कुछ अमरीकी मुतालबात पूरे होने पर जंगबंदी पर बात करने के लिए तैयार हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जेडी वेंस ने सख्त पैगाम पहुंचाया कि ट्रंप के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। जेडी वेंस ने खबरदार किया कि जब तक ईरान मुआहदा ना कर ले दबाव बढ़ाते रहेंगे। ईरान ने अमरीका का जंगबंदी मुज़ाकरात करने का दावा मुस्तरद कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने वाज़ेह किया कि जारियत करने वालों को सज़ा देने और नुकसानात का मुकम्मल हर्जाना मिलने तक जंग जारी रहेगी। ईरान ने पाकिस्तान और दीगर सालिसों के जरिए मुख्तलिफ पैगामात मिलने की तस्दीक कर दी। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के मुताबिक पैगामात का जायज़ा लिया जा रहा है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने एक बार फिर अमरीका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहियान और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते और आलमी अमन और इस्तेहकाम की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहरियों और तनसीबात को निशाना बनाने पर ईरानी हमलों की मजम्मत। ईरानी कार्रवाइयाँ खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरा करार दे दी। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के रुकन और पासदारान इनकलाब के साबिक कमांडर मोहसिन रज़ाई के मुताबिक ईरान अब हुर्मुज़ बंद कर सकता है, लेकिन पूरी दुनिया भी जमा हो जाए तो उसे नहीं खोल सकती। मोहसिन रज़ाई का कहना है कि किसी भी जहाज़ को अब हुर्मुज़ में दाखिल होने, मुड़ने, गुजरगाह के तंग तरीन हिस्से से गुजरने और दूसरी जानिब निकलने में 7 से 8 घंटे लगते हैं। इसलिए ईरान का अब हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल कायम रहेगा। France, Macron, whose wife treats him extremely badly, and still recovering from the right to the job. ट्रंप अपना हुर्मुज़ खुलवाने में मदद न देने पर फ्रांसीसी सदर पर बरस पड़े। कहा कि एमेनुएल मैक्रोन की बीवी उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करती। उनका दाया झगड़ा अभी तक ठीक नहीं हुआ। ट्रंप की नेटो से अलग होने की धमकियां। खबर एजेंसी के मुताबिक नेटो सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे आइंदा हफ्ते तयशुदा दौरे पर अमेरिका जाएंगे। ईरानी इंटेलिजेंस ने जासूसी का बड़ा नेटवर्क पकड़ लिया। मोसाद के लिए जासूसी करने वाले 8 अलैदगी पसंद भी गिरफ्तार। एजेंट्स के लिए लाई गई अमरीकी और इसराइली डिवाइसेस बरामद। जासूसी के आलात और मवासलाती साजो सामान की बड़ी खेप जब्त कर ली। ईरानी मुसल्लह अफवाज से इज़हार यकजहती के लिए मुल्क भर में रैलियां। लाखों शहरी सड़कों पर निकल आए। बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों की बड़ी तादाद शरीक। तख्ती स्क्वायर पर जंगी बहरी दीना में शहीद अली शाबान को सलामी पेश की गई। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट क्रूड की कीमत $106 फी बैरल पर पहुंच गई। अमरीकी खाम तेल $104 फी बैरल पर आ गया।
ट्रंप की ईरान पर हमलों की धमकियों के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। कारोबार के दौरान 4000 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,51,000 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। एशियाई मंडियों में सरमायाकारों के अरबों डॉलर डूब गए। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इत्तला पर कामयाब ऑपरेशन। पाक अफगान सरहद पर दहशतगर्दों की नकलो हरकत बरवक्त पकड़ी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाई में 8 खवारिज हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक भारतीय सरपरस्ती में चलने वाली तंजीम से है। कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। अफगान तालिबान मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट में नाकाम। पाकिस्तान का अफगान हुकूमत से अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म का दहशतगर्दी के अफरीद के मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक उसके खिलाफ जंग जारी रखने का ऐलान। वज़ीर आज़म का शुमाली वज़ीरिस्तान में फितना अल खवारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। वाज़े किया कि कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के गैर मुतज़लज़ल अज़म में अफ़वाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश। शारा फैसल, एयरपोर्ट और बलीद के अतराफ तेज़ बारिश। सदर, आई चंद्रीगढ़ रोड, टावर, क्लिफ्टन डिफेंस, गुलशन इकबाल और गुलिस्तान जौहर में भी बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात की शहर-ए-कायद में 4 अप्रैल तक वक्फे से बारिश की पेशगोई। सिंध हुकूमत ने बारिश के पेश नज़र पेशगी इंतजामात मुकम्मल कर लिए। नशेबी इलाकों से बर वक्त निकासी के लिए इजाफी डी वाटरिंग पम्प्स नस्ब। ज़रूरी अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गईं। शरजील मेमन की बारिश के दौरान शहरियों से मोहतात रहने की अपील। बलूचिस्तान में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। छतें और आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चे जाँ बहाक, 5 अफराद जख्मी हो गए। नदी नालों में तोक़यानी और नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। 100 से ज़्यादा मकानों को नुकसान पहुंचा। कच्ची में 50 से ज़्यादा मवेशी हलाक हो गए। गुलिस्तान में मुसाफिरों से भरी वैन सैलाबी रेले में बह गई। इंतजामिया ने बरवक्त कार्रवाई करके मुसाफिरों को बचा लिया। लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉग तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत। मुख्तलिफ सरकारी महकमों ने रिपोर्ट्स अदालत में जमा करा दी। शिकागो यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में गर्मी की शिद्दत के बायस अमवात में इजाफा होगा। गर्मी की शिद्दत से दुनिया भर में हर 3 अमवात में से 1 मौत पाकिस्तान में होगी। अदालत के रिमार्क्स। वज़ीर आला पंजाब ने 16,000 से ज़ायद मासूम दिलों की धड़कनों की जिम्मेदारी उठा ली। पंजाब के आलमी मयार के चिल्ड्रन हार्ट सर्जरीज के लिए 16,500 से ज़ायद रजिस्ट्रेशन और 11,000 कामयाब ऑपरेशन किए गए। 3,500 से ज़ायद बच्चों का सरकारी खर्च पर इलाज मुकम्मल। सीएम स्पेशल ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के तहत 255 मरीजों की मुफ्त लिवर ट्रांसप्लांटेशन की गई। वज़ीर आला पंजाब का ऑटिज़म में मुब्तला बच्चों की तालीम व तरबियत और बहाली के अज़्म का यादा। ऑटिज़म के शिकार अफराद के हकूक़, उनकी शमूलियत और माशरे में मसावी मवाक़े पैदा करने पर जोर। लाहौर के इलाके चोंग में तालिबा पर तेज़ाब फेंकने वाला मुलजिम मुकाबले के दौरान अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। मुलजिम ने रिश्ता ना देने पर तालिबा पर तेज़ाब फेंक दिया था। लड़की का चेहरा और सर झुलस गया। लाहौर के इलाके काहना से 2 रुकनी डकैत ग्रुप गिरफ्तार। मुलजमान ने कुछ दिन कबल डेंगी वर्कर्स और तालिब इल्मों से लूटमार की थी। मुलजमान की